Hello students, myself Jinalisha welcomes you on behalf of Saraswat International Academy. Today we will begin with the next part of the chapter Molecular Basis of Inheritance. Students, in the previous lecture we have studied regarding the process of translation. Today we will begin with the next topic, regulation of gene expression. Now first of all, what is gene expression? So basically gene expression, or you can say expression of a gene, it is a process by which the information encoded in a gene is used in the synthesis of a functional gene product like a polypeptide. So basically what is gene expression? Whatever information is present in a gene is a segment of DNA. So whatever information is present in the gene, that information is used to synthesize certain functional products. Say for example the polypeptide, हमने देखा कि डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होकर एमआरएनए बनता है और एमआरएनए व्हेन अंडरगोस ट्रांसलेशन will be responsible for the formation of the protein. So that process is called as gene expression, where the information stored in the gene will be used to synthesize a functional product. Now what is regulation of gene expression? The mechanism which stimulates the expression of certain genes, that is synthesis of some polypeptides, and inhibits the expression of others as required in the cell is called as regulation of gene expression. So what is regulation of gene expression? So it is a mechanism by which the certain genes get expressed and other genes are not expressed, or there will be the inhibition of the expression of the other genes as per their requirement in the cell. So the mechanism which stimulates the expression of the certain genes and inhibits the expression of the others as required in the cell, that process is called as the regulation of gene expression. Regulation of gene expression refers to a very broad term that may occur at various levels. Considering that gene expression results in the formation of polypeptide, it can be regulated at several levels. Now basically gene expression is what? Basically it will finally result in the formation of a polypeptide. So now this process can be regulated at various levels. Now in the eukaryotic organisms, the regulation can be exerted at the following levels. So which are those levels? ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, यानी कि जहाँ पे प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बनता है, डीएनए में से जब आरएनए बनता है वहाँ पे रेगुलेशन की ज़रूरत है. देन प्रोसेसिंग लेवल, यानी कि प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बना, वो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट को मैच्योर एमआरएनए में कन्वर्ट करना, दैट इज प्रोसेसिंग लेवल. देन ट्रांसपोर्ट ऑफ द एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म. वेर इज एमआरएनए फॉर्म्ड? इन द न्यूक्लियस. अभी वो एमआरएनए प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पे करने वाला है? तो इन द साइटोप्लाज्म. सो वट एवर एमआरएनए इज फॉर्म्ड इन न्यूक्लियस, इट नीड्स टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द साइटोप्लाज्म. So at that point also regulation is required. And finally at the translational level, यानी कि the mRNA will be used later in the process of the translation, that is in the process of protein synthesis. So in the eukaryotic organism, the regulation is exerted at 4 levels: the transcriptional level, the processing level, the transportation of the mRNA to the cytoplasm from the nucleus, and finally at the translational level. Now the genes in the cell are expressed to perform a particular function or set of function. For example, if an enzyme beta-galactosidase is synthesized by Ecoli, it is used to catalyze the hydrolysis of disaccharide lactose into galactose and glucose. The bacteria use them as a source of energy. Now genes, they are expressed in a cell to perform the various functions. Okay. Example, there is an enzyme called as beta-galactosidase which is synthesized in E. coli. Now what is the use of this enzyme?
This enzyme is used for the hydrolysis of a disaccharide lactose. Yani it is used to break the lactose, or you can say it is used to digest the lactose into glucose and galactose, which in turn will yield the energy to the Ecoli bacteria, or this will later act as the source of the energy. Hence, if the bacteria do not have any lactose around them to be utilized for energy source, they would no longer require the synthesis of the enzyme beta-galactosidase. See, beta-galactosidase कब required है? जब बैक्टीरिया के पास और when the medium is having the lactose, तब beta-galactosidase enzyme की requirement है. But if the medium is devoid of the lactose, या बैक्टीरिया के पास कोई भी लैक्टोज नहीं है, so क्या वहाँ पे ये एंजाइम की रिक्वायरमेंट है? नो. इफ द बैक्टीरिया डू नॉट हैव द लैक्टोज अराउंड देम, then there is no need of this particular enzyme. There is no need of the beta-galactosidase enzyme. Therefore, in simple terms, it is a metabolic, physiological or environmental condition that regulate the expressions of the gene. So, who regulates the expression of the genes? Either physiological condition और मेटाबॉलिक कंडीशन और द एनवायरमेंटल कंडीशन. हमने अभी देखा कि लैक्टोज अगर मीडियम में है तो बीटा गैलेक्टोसिडेज की रिक्वायरमेंट है. बट इफ द लैक्टोज इज नॉट प्रेजेंट इन द मीडियम, डज द बैक्टीरिया रिक्वायर द बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम? नो. सो ये जो रेगुलेशन है वो कहाँ पे हो रहा है? एट द मेटाबॉलिक लेवल. The development and differentiation of the embryo to the adult organisms are also the result of the coordinated regulation of expression of the several set of genes. Now see, the embryo is converted into adult organism. So basically this conversion of the embryo into the adult organism is also due to the expression of the several set of the genes. Now we will deal how that regulation occurs in prokaryote. मैंने बोला कि यूकैरियोट्स में तो the regulation occurs at the 4 levels. But what happens in prokaryotes? So in prokaryotes, control of the rate of transcriptional initiation is the predominant site for the control of the gene expression. In a transcription unit, the activity of the RNA polymerase at a given promoter is in turn regulated by the interaction with the accessory proteins which affect its ability to recognize the start site. So transcription unit हमने देखा था, right? वहाँ पे promoter site है, वहाँ पे terminator site है, and वहाँ पे structural genes है. ये सब हमने देखा था. So basically in a transcription unit, what happens? The RNA polymerase, it will bind to the promoter, but this binding of the RNA polymerase to promoter, it is regulated by certain proteins. The binding of the promoter, the binding of the RNA polymerase at the promoter region is regulated by certain proteins, and these proteins have the ability to recognize the start site. हमने सिग्मा फैक्टर देखा था, right? So basically RNA polymerase किसके साथ bind होता था? सिग्मा फैक्टर, and it was the sigma factors which helps the RNA polymerase to find the the starting site. So basically transcription में RNA polymerase is important. RNA polymerase, it should bind to the promoter, but ये binding of the polymerase to the promoter is guided by what? Proteins. It is the certain accessory proteins which helps the polymerase to find the start sites. So these regulatory proteins can act both positively, that is activators, and negatively like repressors. So ये जो proteins है, regulatory protein यानी कोई प्रोसेस को वो रेगुलेट कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं. सो दिस रेगुलेटरी प्रोटीन्स, दे कैन एक्ट बोथ पॉजिटिवली यानी वो एक्टिवेट कर सकते हैं
as well as they can act negatively, like they can act as the repressors, यानी inhibitors की तरह काम कर सकते हैं. The accessibility of the promoter regions of the prokaryotic DNA is in many cases regulated by the interactions of the proteins with the sequences termed as operators. So क्या बोला है कि promoter region of the prokaryotic DNA, वहाँ पे basically there is the interaction of proteins with certain sequences which are called as the operators. What are they called as? They are called as the operators. So basically what is operator? The operator is a region adjacent to the promoter element in most operons, and in most cases the sequence of the operator bind a repressor protein. So what is an operator? मैंने बोला कि basically prokaryotic DNA में there are operators जो सब प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज एन ऑपरेटर? सो ऑपरेटर इज अ रीजन विच इज एडजेसेंट टू द प्रमोटर एलिमेंट इन द ओपेरॉन. ओपेरॉन क्या है वो हम बाद में देखते हैं. सो बेसिकली it is adjacent to the promoter, and in many cases this operator will bind with which protein? With repressor protein. अब ये रिप्रेसर प्रोटीन क्या है, ये प्रमोटर क्या है, ये ऑपरेटर क्या है, वी विल सी इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक. ईच ओपेरॉन हैज़ इट्स स्पेसिफिक ऑपरेटर एंड स्पेसिफिक रिप्रेसर. कोई भी ओपेरॉन होगा दे विल हैव अ स्पेसिफिक ऑपरेटर एंड अ रिप्रेसर. फॉर एग्जाम्पल द लैक ऑपरेटर इज प्रेजेंट only in the lac operon and it interacts specifically with the lac repressor only. एक एग्जाम्पल दिया है lac operator जो सिर्फ किस में होता है? lac operon में. and this lac operator will bind with the lac repressor only. so operon, जितने भी operons होते हैं they will have their specific operator, they will have the specific repressor. एग्जाम्पल दिया है कि लैक ओपेरॉन में देर इज अ लैक ऑपरेटर एंड दिस लैक ऑपरेटर इंटरैक्ट्स ओनली विद द लैक रिप्रेसर. वो दूसरे किसी के साथ इंटरैक्ट नहीं कर सकता है. नाउ क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज एन ओपेरॉन? सो बेसिकली ओपेरॉन इज अ क्लस्टर ऑफ जीन्स. व्हाट इज ओपेरॉन? ओपेरॉन इट इज अ क्लस्टर ऑफ जीन्स. यही हम आज देखने वाले हैं रिगार्डिंग द लैक ओपेरॉन. सो द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. हाउ द genes expression is controlled in prokaryote. See, to study it in eukaryote it is very difficult because regulation occurs at the 4 levels. But how the expressions of the genes are controlled, are regulated in prokaryotes, that can be easily studied with the help of the operon. Bacteria can regulate the synthesis of enzyme in such a way that the enzymes are produced when the substrates on which these enzymes have to act are present. Okay, बैक्टीरिया में एक ऐसी mechanism है कि बैक्टीरिया ऐसा रेगुलेशन कर सकते हैं कि they will synthesize enzymes when only the substrates on which these enzymes are going to work is present. Say for example, एक एंजाइम बीटा गैलेक्टोसिडेस की बात करते हैं. बीटा गैलेक्टोसिडेस इज एन एंजाइम. वो किसके ऊपर वर्क करती है? लैक्टोज. सो लैक्टोज इज अ सबस्ट्रेट for the beta galactosidase enzyme. So now I am talking about E. coli bacteria. The E. coli bacteria will synthesize beta galactosidase only when the lactose, which is the substrate, is present in the E. coli bacteria. E. coli bacteria कब बीटा गैलेक्टोसिडेस का सिंथेसिस करेगी? जब E. coli के मीडियम में लैक्टोज का प्रेजेंस होगा. सो दिस इज व्हाट bacteria, it can regulate the synthesis of the enzymes in such a way
that the enzymes are produced only when the substrate on which these enzymes are going to act is present. In 1961, Francois Jacob and Jacque Monod, they proposed a mechanism called operon hypothesis for the regulation of gene action as a result of their studies on the metabolism in Ecoli. So, Jacob and Monod in 1961, they proposed a mechanism which is called as the operon hypothesis for the regulation of the gene action as a result of their studies on metabolism in Ecoli bacteria. So, first of all, what is an operon? Operon is a segment of a DNA that comprises one or more adjacent structural genes, an operator gene, a promoter gene and a regulator gene. So, basically what is an operon? It is a cluster of genes. Now, this cluster of genes, what is it? It is a basically cluster of genes, or you can say operon is a segment of DNA. अभी ये DNA segment के पास क्या होता है? It will have one or more structural genes. Structural genes वो होते हैं कि जिनका ट्रांसक्रिप्शन होकर पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स बनने वाले हैं, राइट? सो व्हाट आर दे कॉल्ड एज? दे आर कॉल्ड एज द स्ट्रक्चरल जीन्स. So, what an operon consists of? It consists of the structural genes, either one, two or more. It will have an operator gene, it will have a promoter gene as well as it will have the regulator gene. So, basically operon is a cluster of genes with the related functions. What is an operon? It is a segment of a DNA which consists of the cluster of genes. देखो कितने कितने genes है? Structural genes है, operator gene है, promoter gene है, regulator gene है. So basically it is a cluster of genes with the related functions. Each and every gene's functions are coordinated. So basically operon is a cluster of genes. Now the operon, it works in cooperation with a repressor protein and an inducer substance. Now ये operon के working के लिए there is a requirement of a repressor protein as well as there is a requirement of inducer substance. It works in association, or you can say it works in cooperation with a repressor protein and an inducer substance. So what is repressor protein, what is inducer, ये हम देखते हैं. Now the operons are broadly classified into two types. One is the inducible operon and another one is the repressible operon. So what is an inducible operon? This operon is switched on when a chemical called inducer is present. Okay, so what is an inducible operon? जब chemical inducer या ओपेरॉन में इंड्यूसर प्रेजेंट है तो स्ट्रक्चरल जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन होगा और व्हाट कैन वी से ये ओपेरॉन विल स्टार्ट वर्किंग in the presence of a chemical called as a inducer. Then such operon are called as an inducible operon. For example, LACOPERON. See, LACOPERON में lactose molecule is a inducer. ये लैक्टोज की वजह से क्या होता है, वो ओपेरॉन एक्टिवेट होता है, स्विच ऑन होता है, उसका फंक्शनिंग स्टार्ट हो जाता है. Then such operons are called as a inducible operon, and other operons are repressible operon. The operon is switched off when a chemical substance called co-repressor is present. So जब ओपेरॉन का फंक्शनिंग बंद हो जाता है, कब बंद हो जाता है, जब को रिप्रेसर प्रेजेंट है. सो इन द प्रेजेंस ऑफ द को रिप्रेसर द ओपेरॉन स्टॉप वर्किंग, या उसका जो एक्टिवेशन है वो नहीं होगा. देन सच ओपेरॉन्स आर कॉल्ड एज द रिप्रेसिबल ओपेरॉन. The example is the tryptophan or TRY operon. Tryptophan
or also called as the TRY operon. Now, which are the components of the inducible operon? In your syllabus, only the inducible operon, that is LACOPERON, is given. So, what are the components of the inducible operon? So, first is the inducer. So, it is a molecule that binds to the repressor and prevents the attachment of the repressor to the operator and thus activates the transcription on. Inducible operon हमने देखा. What is an inducible operon? It is switched on in the presence of the inducer. So, inducer एक ऐसा molecule है जो repressor molecule के साथ bind होगा. Now, अगर inducer repressor से bind होगा तो what will happen? जो repressor है वो ऑपरेटर रीजन के साथ बाइंड नहीं करेगा. जो रिप्रेसर है वो किसके साथ बाइंड नहीं करेगा? ऑपरेटर के साथ. अगर रिप्रेसर ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं होता तो जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन होगा एंड जो भी एंजाइम्स है उनका प्रोडक्शन होगा. ये पीछे ज़्यादा क्लियर होगा, बट कीप इन माइंड कि इंड्यूसर इट इज़ अ मॉलिक्यूल विच बाइंड्स टू द ऑपरेटर एंड प्रिवेंट्स द attachment of the repressor to the operator and thus the transcription process will be on. The next is the promoter. So, it is a region on the DNA or it is a binding site on the DNA to which the enzyme RNA polymerase attach and starts the transcription. So, promoter region is that site on the operon कि जहाँ पे RNA पॉलीमरेज एंजाइम अटैच होगी एंड ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को स्टार्ट करेगी. नाउ रिप्रेसर. व्हाट इज रिप्रेसर? सो अगेन इट इज़ अ प्रोटीन विच इज़ एबल टू प्रिवेंट द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ अ जीन और अ प्रोटीन. सो रिप्रेसर ऐसा प्रोटीन है जो ट्रांसक्रिप्शन को रोक सकता है. कैसे? अगर इंड्यूसर नहीं है, अगर लैक्टोज मीडियम में नहीं है तो रिप्रेसर लैक्टोज के साथ बाइंड नहीं करेगा, बल्कि वो किसके साथ बाइंड कर देगा? ऑपरेटर के साथ, जिसकी वजह से वो पूरे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा. सो इट इज़ अ प्रोटीन विच इज़ एबल टू प्रिवेंट द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ अ जीन. एंड फाइनली द ऑपरेटर. सो द DNA बाइंडिंग साइट टू विच the repressor must bind in order to prevent the transcription of the genes of operon. So, operator वो साइट है DNA के ऊपर कि जहाँ पे रिप्रेसर को अगर ट्रांसक्रिप्शन को रोकना है, यानी कि if repressor wants to prevent the transcription, then it is the operator site के जहाँ पे रिप्रेसर को बाइंड होना ज़रूरी है. So, these are the four important components of the inducible operon. They are inducer, promoter, repressor and the operator. Now, we will study regarding the LACOPERON in detail. So, the three structural genes which are the genes which encodes the protein. Okay, so there are three structural genes of the LACOPERON. They are LAC-Z gene. अभी ये जीन का जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो क्या बनेगा? बेसिकली mRNA बनेगा और ये mRNA जब ट्रांसलेशन करेगा तो क्या बनाएगा? एंजाइम beta-galactosidase. See, genes is a segment of DNA which when transcribes will form the mRNA whose translation results in the formation of a protein. And we know that except for the ribozyme, all enzymes are protein in nature. So, ये जो LACOPERON है उसमें कितनी genes है टोटल? 3 genes, 3 structural genes है. See, promoter is also a gene, then operator is also a gene and there are structural genes. So, we are talking about the structural genes. Structural genes are those genes जिसका ट्रांसक्रिप्शन होकर mRNA बनेगा एंड ट्रांसलेशन होकर प्रोटीन्स बनेंगे. सो ये जो LACOPERON है उसमें 3 स्ट्रक्चरल जीन्स है. पहले इज़ द LAC-Z जीन. वो किसके लिए कोड करती है? इट कोड्स फॉर द एंजाइम beta-galactosidase.
नाउ ये बीटा गैलेक्टोसिडेज का काम क्या है? सो इट ब्रेक्स द लैक्टोज इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज. Then there is another gene called as LAC-Y, and LAC-Y it encodes it stores the information for the enzyme permease. यानी LAC-Y जीन का ट्रांसक्रिप्शन होकर mRNA बनेगा, जिसका ट्रांसलेशन होकर कौन सा प्रोटीन बनेगा? एंजाइम permease. Now what is the importance of the permease? It transports the lactose into the cell from outside. Yani it is the enzyme which will help in the transportation of the lactose from outside of the cell to the inner side. And finally the LAC-A gene which encodes the transacetylase. This LAC-A gene, it codes for the transacetylase. This enzyme transfers the acetyl group from acetyl-CoA to beta-galactosidase. It transfers the acetyl group from acetyl-CoA to beta-galactosidase. Now ये जो तीनों तीन structural genes है, they lie adjacent to each other. यानी they are located nearer to each other. Now ये जो तीनों तीन जीन है, all these three genes, उसको कंट्रोल एक ही प्रमोटर करता है, एंड दैट प्रमोटर इज डेजिग्नेटेड एज पी. सो ऑल दिस थ्री जीन्स, ऑल दिस थ्री स्ट्रक्चरल जीन, लैक जेड, लैक वाई एंड लैक ए, ये जो तीनों तीन जीन है, दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेम प्रमोटर, एंड द प्रमोटर इज डेजिग्नेटेड एज स्मॉल p. Now what is a promoter? It is a region where the RNA polymerase bind to the DNA and prepares to initiate transcription. So promoter is where the RNA polymerase, it binds to DNA and it prepares to initiate the transcription. Now there is an other regulatory element in an operon is a operator which is designated as O. So apart from structural genes, apart from promoter, there is another region in an operon, and that region is called as an operator, and this operator will be designated as O. Now in addition to above, there is another gene which is officially not the part of the operon. Okay, ये promoter था, ऑपरेटर था एंड स्ट्रक्चरल जीन्स थे. कितने स्ट्रक्चरल जीन्स थे? 3 स्ट्रक्चरल जीन्स. अपार्ट फ्रॉम दिस देर इज अनदर जीन विच टेक्निकली इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस ओपेरॉन. यानी एक दूसरी जीन है जो टेक्निकली ये ओपेरॉन का पार्ट नहीं है, क्योंकि ये जो जीन है उसका खुद का एक दूसरा प्रमोटर है. ओके, बट so it is technically not a part of operon. It is controlled by a separate promoter and is expressed all the time or consecutively, but it plays an important role in the function of the operon. See, LACOPERON के कौन से पार्ट्स है? ऑपरेटर है, प्रमोटर है एंड 3 स्ट्रक्चरल जीन्स, LAC-Z, LAC-Y एंड LAC-A. So these are the 5 components of, और basically हम 3 बोल देंगे, स्ट्रक्चरल जीन्स टोटल 3 है तो 5 टोटल हो जाएगा. सो प्रमोटर है, ऑपरेटर है एंड स्ट्रक्चरल जीन्स है. दिस इज अ ऑपेरॉन. ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस कंपोनेंट देर इज अनदर रेगुलेटरी जीन जो टेक्निकली ये ओपेरॉन का पार्ट नहीं है. क्यों टेक्निकली ये ओपेरॉन का पार्ट नहीं है? क्योंकि ये जीन को कोई दूसरा ऑपरेटर कंट्रोल करता है. ये जो जीन है, रेगुलेटरी जीन है, उसको कोई दूसरा प्रमोटर एक्टिवेट करता है. एंड दूसरा, ये जो जीन है ये ऑल द टाइम कंटिन्यूसली इट इज़ एक्सप्रेस्ड. बट ये जो जीन है, ये जो अपना ओपेरॉन है, लैकोपेरॉन के जो हम बात कर रहे हैं, उसके फंक्शनिंग के लिए ये जीन बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो दिस जीन इज कॉल्ड एज LAC-I जीन और ऑल्सो कॉल्ड रेगुलेटर और इनहिबिटर जीन,
which encodes a protein called as a LAC repressor. मैंने क्या बोला कि ये ओपेरॉन को कंट्रोल करने के लिए एक दूसरी जीन है LAC-I. ये LAC-I जीन आइदर रेगुलेटर का काम करेगी या इनहिबिटर का काम करेगी, लेकिन उसका ट्रांसक्रिप्शन कंटिन्यूअसली होगा. ओके, कोई भी जीन का ट्रांसक्रिप्शन होता है तो वो क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है. सो व्हाट प्रोटीन इट कोड्स फॉर? सो इट कोड्स फॉर अ प्रोटीन कॉल्ड एज अ LAC repressor. It codes for a protein which is called as the LAC repressor. So लैकोपेरॉन के कंपोनेंट क्या है? प्रमोटर है, ऑपरेटर है एंड स्ट्रक्चरल जीन्स है. लेकिन ये सबको कंट्रोल करने के लिए एक दूसरी जीन है, दैट इज LAC-I जीन. एंड LAC-I जीन का प्रोडक्ट क्या है? LAC रिप्रेसर. एंड ये जो LAC-I जीन है वो ऑलवेज क्या होती है? एक्सप्रेस होती है. सो कंटिन्यूअसली इट विल फॉर्म द LAC रिप्रेसर. नाउ the LAC repressor has two functional domains or regions. यानी ये LAC repressor के दो regions है, उसके पास दो important parts है. One part that binds to the DNA of the operator region and other that binds to the lactose which is inducers. So LAC repressor के पास दो बाइंडिंग साइट है. एक साइट ऐसी है कि जो डीएनए के ऊपर ऑपरेटर के साथ अटैच हो जाएगा, एंड एक साइट ऐसी है कि वो इंड्यूसर यानी कि लैक्टोज के साथ बाइंड होगा. नाउ व्हेन द रिप्रेसर बाइंड्स टू ऑपरेटर, इट प्रिवेंट्स द आरएनए पॉलीमरेज एडवांसिंग अलोंग द ओपेरॉन एंड ट्रांसक्रिप्शन डज नॉट अगर. मैंने बोला कि रिप्रेसर दो चीज़ से बाइंड कर सकता है. वन इज द डीएनए at the operator site, or you can say it binds to the operator site of the DNA, or it will bind to the lactose which is an inducer. अगर रिप्रेसर ने ऑपरेटर के साथ बाइंड किया तो क्या होगा? आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं बढ़ पाएगा, वो आरएनए पॉलीमरेज को ब्लॉक कर देगा. आरएनए पॉलीमरेज ब्लॉक हो गया, इट मीन्स that the transcription won't take place. So the regulation of an operon depends on regulating whether or not the repressor binds to operator. So ये जो ओपेरॉन का रेगुलेशन है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? whether the repressor is binding to operator or not. अगर रिप्रेसर ने ऑपरेटर के साथ बाइंड किया तो ओपेरॉन का रेगुलेशन नहीं होगा, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा. सो नाउ हाउ दिस वर्क वी विल सी. what happens when lactose is present and what happens when lactose is happen. So ये ओपेरॉन कैसे वर्क करता है? So we will take two conditions. We will see what happens if lactose is absent in the medium, and we will also see what happens if lactose is present in the medium. So we will see first of all what happens when lactose is absent. What happens when lactose is absent? So if there is no lactose, LAC-I gene is transcribed and mRNA is translated producing a protein called as LAC repressor. लैक्टोस नहीं है तो क्या होगा? सो मैंने बोला सपोज ये अपना ओपेरॉन है, ओपेरॉन के कंपोनेंट्स, सपोज ये आई जीन है, then there is a promoter, then there is a operator, and there are structural genes. Which are the structural gene? Z, Y and A. Okay. Okay, ये पूरा एक ओपेरॉन है, लेकिन ये ओपेरॉन को कंट्रोल करता है एक जीन दैट इज कॉल्ड एज द आई जीन. लैक्टोज नहीं है तो आई जीन का क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन होगा. ट्रांसक्रिप्शन होकर वो क्या बनाएगा? इट विल फॉर्म द mRNA. ओके, ये mRNA फिर क्या करेगा? ट्रांसलेशन करेगा, एंड ट्रांसलेशन करके क्या बनाएगा? इट विल फॉर्म द LAC repressor. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो इफ देर इज नो लैक्टोज इन द मीडियम, द LAC-I जीन इज ट्रांसक्राइब्ड. ट्रांसक्रिप्शन से mRNA बनेगा, mRNA का ट्रांसलेशन होकर
कौन सा प्रोटीन बनाएगा? लैक रिप्रेसर। नाउ ये रिप्रेसर ऑपरेटर के साथ बाइंड करके आरएनए पॉलीमरेज को क्या करेगा? ब्लॉक करेगा। इफ लैक्टोज इज नॉट प्रेजेंट इन द मीडियम, लैक आई जीन का ट्रांसक्रिप्शन होकर एमआरएनए बनेगा। एमआरएनए क्या बनाएगा? ट्रांसलेशन से रिप्रेसर बनाएगा। नाउ दिस रिप्रेसर विल बाइंड टू द ऑपरेटर साइट ऑफ द ओपेरॉन एंड इट विल ब्लॉक द आरएनए पॉलीमरेज। सी, ये सपोज प्रमोटर है, ये ऑपरेटर है एंड ये 3 स्ट्रक्चरल जीन्स है Z, Y एंड A। ओके, अभी रिप्रेसर कहाँ पे बाइंड हो रहा है? ऑपरेटर। और आरएनए पॉलीमरेज कहाँ पे बाइंड होने वाला है? प्रमोटर। लेकिन यहाँ पे ये जो साइट है वो रिप्रेसर ने क्या कर दी है? ब्लॉक कर दी है। यानी आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ पाएगा? नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है? रिप्रेसर ने ये वाली साइट को ब्लॉक कर दिया है। So when repressor binds to operator, it blocks the RNA polymerase. Now when RNA polymerase is blocked, there is no transcription and the enzymes for the lactose metabolism are not synthesized. Okay, RNA polymerase ब्लॉक हो गया यानी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा यानी Z, Y एंड A जो जीन्स है, Z जीन क्या बनाने वाला है? beta-galactosidase। Y क्या बनाने वाला है? permease। एंड A क्या बनाने वाला है? transacetylase। सो ये तीन एंजाइम का फॉर्मेशन ही नहीं होगा, राइट? बट इज इट गुड और बैड? येस, ऑफ कोर्स इट इज़ गुड। क्यों गुड है? अगर लैक्टोज ही मीडियम में नहीं है तो क्या ये 3 एंजाइम की रिक्वायरमेंट है? नो। So this is good because there is no lactose to metabolize. So what happens when lactose is absent in the medium? When lactose is absent in the medium, LAC-I का ट्रांसक्रिप्शन होकर mRNA बनेगा, जिसका ट्रांसलेशन होकर लैक रिप्रेसर बनेगा। लैक रिप्रेसर ऑपरेटर से बाइंड करके आरएनए पॉलीमरेज को ब्लॉक करेगा। If RNA polymerase is blocked, what will happen? There won't be transcription, and as there is no transcription, the enzymes for the lactose metabolism are not synthesized, and this is good because there is no lactose to metabolize. अगर lactose ही नहीं है तो वो enzyme का काम ही क्या है? So this is what happens when lactose is absent in the medium. So see students, this is an operon. Now see, this is a regulatory gene I. Okay, अभी ये जीन को एक दूसरा प्रमोटर कंट्रोल करता है and this is the main operon we are talking about, that is the LACOPERON. This is the promoter site, this is the operator site and these are 3 structural genes. ये कौन सी genes है? These are the structural genes. Now what happens when the inducer or you can say lactose is absent? So when lactose is absent, LAC-I gene क्या बनाएगा? mRNA, and ये mRNA क्या बनाएगा? रिप्रेसर। अभी ये जो रिप्रेसर है वो किसके साथ बाइंड कर दिया? ऑपरेटर। इसकी वजह से ये देखो, ये ब्लॉक बन गया, एक ब्लॉकेज आ गया। ब्लॉकेज आ गया यानी आरएनए पॉलीमरेज इज अनेबल टू बाइंड टू प्रमोटर। ये आरएनए पॉलीमरेज है, ये बाइंड ही नहीं होगा, ये बाइंड नहीं होगा। सो व्हाट विल हैपन? repressor binds to the operator and prevents the RNA polymerase for transcribing and operon. ये प्रमोटर, ये जो पॉलीमरेज है, दिस इज आरएनए पॉलीमरेज, इट इज़ अनेबल टू बाइंड टू द प्रमोटर। ये यहाँ पे बाइंड नहीं होता है तो ये तीन जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन पॉसिबल नहीं है। सो दिस इज व्हाट हैपन्स व्हेन लैक्टोज इज एब्सेंट इन द मीडियम। Now we will see what happens when lactose is present. If there is lactose, the events unfold differently. कुछ different process होगा. A small amount of lactose gets into the cell and affects the regulation of operon. So पहले तो lactose बाहर है तो थोड़ा सा small amount में lactose पहले ही अंदर चला जाएगा. Now lac repressor is still synthesized, यानी lactose है या नहीं है,
जो लैक आई जीन है वो कंटिन्यूसली क्या करेगी, रिप्रेसर का फॉर्मेशन करेगी। लैक्टोज है फिर भी लैक आई जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन से mRNA बनेगा और वो mRNA कौन सा प्रोटीन बनाएगा, रिप्रेसर। नाउ आई टोल्ड यू के रिप्रेसर के पास दो रीजन्स है, देयर आर टू डोमेन, one region binds to the operator and other binds to the inducer. In our case the inducer is lactose. अभी तो मीडियम में lactose है तो क्या होगा, so as mentioned the repressor can bind to lactose. When it does so the repressor undergoes a conformational change, that is change of the shape. Okay, lactose मीडियम में है, थोड़ा lactose सेल के अंदर चला गया. So now what will happen, repressor will bind to the lactose. वो ऑपरेटर के साथ नहीं, पहले वो किसके साथ बाइंड कर लेगा, लैक्टोज के साथ बाइंड करेगा। लैक्टोज के साथ बाइंड करने की वजह से रिप्रेसर का शेप चेंज हो जाएगा। ओके, रिप्रेसर एज इट बाइंड्स विद द लैक्टोज, लैक्टोज इज द इंड्यूसर, so what will happen, it changes the shape. So those molecules that change the shape when they bind to other molecule are called as the allosteric molecule. किसने अपना शेप चेंज किया, रिप्रेसर ने। क्यों चेंज किया, क्योंकि उसने लैक्टोज से बाइंड किया। सो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो अपना शेप चेंज करते हैं किसी और मॉलिक्यूल के साथ अटैच होने की वजह से, सच मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एज द एलोस्टेरिक मॉलिक्यूल्स। नाउ व्हाट हैपन्स, when it undergoes conformational change the repressor is unable to bind to the operator. अभी पहले रिप्रेसर ने किसके साथ बाइंड कर लिया, लैक्टोज, लैक्टोज के साथ बाइंड करने की वजह से उसका शेप चेंज हो गया। नाउ एज द शेप ऑफ द रिप्रेसर हैज चेंज्ड, वो ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं हो पा रहा है। क्यों रिप्रेसर ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसका शेप चेंज हो गया है। क्यों उसका शेप चेंज हुआ है, क्योंकि उसने लैक्टोज के साथ बाइंड किया है। सो नाउ द रिप्रेसर इज अनेबल टू बाइंड टू व्हाट, इट इज अनेबल टू बाइंड टू ऑपरेटर, यानी ऑपरेटर वाली जगह कैसी है, इट इज एम्प्टी। नाउ इजीली व्हाट विल हैपन, आरएनए पॉलीमरेज विल बाइंड टू द प्रमोटर एंड वो जो 3 स्ट्रक्चरल जीन्स है उनका ट्रांसक्रिप्शन होकर mRNA बनेगा, जिसका ट्रांसलेशन होकर 3 एंजाइम्स बन जाएगी इजीली। सो नाउ RNA polymerase therefore is not blocked and is able to transcribe the genes of the operon. रिप्रेसर इज अनेबल टू बाइंड टू ऑपरेटर, क्यों, क्योंकि उसका शेप चेंज हो गया है, यानी ऑपरेटर वाली जगह खाली है। सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग, द RNA polymerase it is not blocked and hence it is able to transcribe the genes. The enzymes encoded by those genes will be produced. The LACOPERON will transport more lactose to the cell and beta-galactosidase will cleave the lactose into glucose and galactose, which can then be further metabolized by other enzymes producing the energy for the cell. See, initially थोड़ा ही lactose अंदर गया, नाउ ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा तो कौन से एंजाइम बनेगी, परमेज बनेगी, बीटा गैलेक्टोसिडेज बनेगी एंड ट्रांसएसिटाइलेज बनेगी। सो परमेज बनने की वजह से व्हाट विल हैपन, मोर एंड मोर लैक्टोज विल कम इनसाइड द सेल एंड बीटा गैलेक्टोसिडेज क्या करेगा, जो लैक्टोज अंदर आया उसको वो क्या करेगा, मेटाबॉलिज्म करेगा, उसको कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज एंड दिस ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज विल फाइनली प्रोड्यूस द एनर्जी. Lactose therefore is able to induce the synthesis of the enzymes necessary for its metabolism by preventing the action of the repressor. So lactose ने क्या किया, उसने ही इंड्यूस किया कि उसके मेटाबॉलिज्म के लिए जो एंजाइम्स रिक्वायर्ड है उसका प्रोडक्शन वो होने दे रहा है। कैसे, by preventing the activity of the repressor and therefore lactose is called an इंड्यूसर ऑफ द लैकोपेरोन। लैक्टोज को क्यों इंड्यूसर बोला है, क्योंकि लैक्टोज ने क्या किया, रिप्रेसर को इनएक्टिवेट कर दिया, डीएक्टिवेट कर दिया, जिसकी वजह से लैक्टोज अपने मेटाबॉलिज्म के लिए जो एंजाइम्स रिक्वायर्ड है उसका सिंथेसिस कर सके।
So therefore lactose is called as an inducer. Lactose की वजह से ही lactose metabolism के लिए जो enzymes चाहिए उनका synthesis हुआ, and therefore it is called as the inducer of an operon. See students, what happens when lactose is present in the medium? So again LAC-I जीन है, चाहे lactose present है absent है, उसका ट्रांसक्रिप्शन तो होगा, रिप्रेसर mRNA बनेगा, एंड ये mRNA किसका प्रोडक्शन करेगा? इट विल फॉर्म द रिप्रेसर. ये क्या बना? रिप्रेसर बना. ओके अभी यहाँ पे इंड्यूसर प्रेजेंट है, यानी क्या प्रेजेंट है? लैक्टोज. सो अपने लिए इंड्यूसर कौन है? इन आवर केस द इंड्यूसर इज लैक्टोज. सो अगर लैक्टोज है तो रिप्रेसर किसके साथ बाइंड कर गया? लैक्टोज के साथ, यानी इंड्यूसर के साथ, जिसकी वजह से ये रिप्रेसर कैसा हो गया? इनएक्टिव हो गया. ये इनएक्टिव रिप्रेसर ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं कर सकता. दिस इनएक्टिव रिप्रेसर कैन नॉट बाइंड विद द ऑपरेटर, एंड हेंस व्हाट विल हैपन? द RNA polymerase will bind to the promoter. देखो promoter region में रेड कलर का RNA polymerase दिखाया है. Now it is not blocked. अभी देखो ऑपरेटर साइड क्या है? खाली है. तो ये आगे जाके ये 3 जीन्स का क्या करेगा? ट्रांसक्रिप्शन होगा. यानी ये ZYA जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन होकर mRNA बनेगा. Z जीन बीटा गैलेक्टोसिडेज बनाएगी ट्रांसलेशन से, Y जीन परमेज बनाएगी, एंड A जीन will form the transacetylase. So this is what happens when lactose is present in the medium. फिर से बोल रही हूँ, when lactose is present in the medium, still LAC-I gene will transcribe and it will form the mRNA, which on translation will form the repressor. Repressor will bind to the inducer. In our case inducer is lactose, यानी repressor will bind to the lactose. Now due to that repressor becomes inactive, क्योंकि उसका शेप चेंज हो गया है. अभी ऐसा है, now see the shape, it has changed. So this inactive repressor cannot bind to the operator. So easily RNA polymerase will bind to promoter, allow the transcription of the 3 structural genes, which on translation will form beta-galactosidase, permease and transacetylase. All of these are required for the metabolism of the lactose. So this is how the LACOPERON work. Now students, आपकी बुक में जो explain किया है, we will go with that. This was this topic मैंने पहले जो explain किया, was for your easier understanding. Now we will see what is given in your book. It is same thing but in some different form. The elucidation of the LACOPERON was also a result of close association between a geneticist, Francois Jacob, and biochemist Jacque Monod. They were first to elucidate transcriptionally regulated system. In LACOPERON, here the LAC refers to lactose. A polycistronic structural gene is regulated by a common promoter and regulatory genes. Polycistronic genes and monocistronic genes. प्रोकैरियोट्स में क्या होता है? पूरा DNA का साथ में ट्रांसक्रिप्शन होगा और सब जीन्स साथ में ही ट्रांसक्रिप्शन होकर mRNA बनाएगी. Such arrangement is very common in bacteria and is referred to an operon. To name few such examples, LACOPERON, TRP that is tryptophan operon, ARA that is arabinose operon, HIS that is histidine operon, and VAL that is valine operon. The LACOPERON consists of one regulatory gene, that is the I gene. Here the term I does not refer to inducer, rather it is derived from the word inhibitor, and the 3 structural genes ZYA. So LACOPERON के पास एक regulatory gene है. What is that regulatory gene called as LAC-I? Keep in mind that I does not stand for inducer. In fact, I stands for inhibitor. क्यों inhibitor? क्योंकि वो inhibit करता है transcription के process को. The I gene codes for the repressor of the LACOPERON. What is the product of the I gene? It is the repressor. The Z gene codes for beta-galactosidase, which is primarily responsible for hydrolysis of disaccharide lactose into its monomeric units glucose and galactose.
The Y gene codes for permease, which increases the permeability of the cell to beta-galactosides, and A gene codes for the transacetylase. Hence, all the three gene products in LACOPERON are required for the metabolism of lactose. ये तीन जीन के जो प्रोडक्ट है परमिएज, बीटा गैलेक्टोसिडेज एंड ट्रांसएसिटाइलेज, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है और क्या फंक्शन है? They are required for the metabolism of the lactose. In the most other operons as well, the genes present in the operon are needed to function together in the same or related metabolic pathway. Lactose is a substrate for the enzyme beta-galactosidase and it regulates the switching on and off of the operon. Hence it is termed as inducer. Now lactose is a substrate के जिसके ऊपर क्या काम करेगा? बीटा गैलेक्टोसिडेज काम करेगा. सो लैक्टोज ही डिसाइड करेगा कि ओपेरोन स्विच होगा या ऑन होगा. अगर लैक्टोज है तो ओपेरोन स्विच ऑन होगा, लैक्टोज एब्सेंट है तो ओपेरोन स्विच ऑफ हो जाएगा. सो operon is called as lactose is called as what? It is called as an inducer. In the absence of the preferred carbon source such as glucose, if lactose is provided in the growth medium of bacteria, the lactose is transported into the cells through the action of permease. क्या बोला है कि अगर कोई ग्लूकोज नहीं है बैक्टीरिया में and if we provide lactose as a source of carbon for the growth of the bacteria, what will happen? The lactose will enter inside the cell with the activity of permease. Remember, the very low level of expression of LACOPERON has to be present in the cell all the time. Otherwise, lactose cannot enter the cell. So, basically, there is a low level of expression of LACOPERON. Otherwise, the lactose won't enter inside the cell. Now, the lactose then induces the operon in the following manner. अभी lactose होगा तो क्या होगा? The repressor of the operon is synthesized all the time constitutively from the I gene. Lactose हो या नहीं हो, repressor अपना product बनाएगा, gene I अपना product बनाएगा and that is repressor. The repressor binds to the operator region of the operon and prevents the RNA polymerase from transcribing the operon. अगर repressor operator से bind कर दिया तो it will prevent the RNA polymerase from transcription of the structural genes. Now, in the presence of inducers such as lactose or allolactose, the repressor is inactivated by the interaction with the inducer. Normally repressor किसके साथ bind कर लेगा? Operator के साथ. लेकिन अगर inducer जैसे कि lactose या allolactose present है तो रिप्रेसर किसके साथ बाइंड हो जाएगा? इंड्यूसर के साथ, एंड जिसकी वजह से वो ऑपरेटर को बाइंड नहीं करेगा. दिस अलाउज द आरएनए पॉलीमरेज एक्सेस टू द प्रमोटर. यानी नाउ एज लैक्टोज इज बाउंड टू द रिप्रेसर, आरएनए पॉलीमरेज विल नाउ बाइंड टू द प्रमोटर एंड ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस proceeds. Essentially, regulation of LACOPERON can also be visualized as the regulation of enzyme synthesis by its substrate. So, हम ये बोल सकते हैं कि substrate ने ही उसकी metabolism के लिए जो enzymes चाहिए उसका synthesis किया है. So, regulation of LACOPERON can be visualized as regulation of enzyme synthesis by its substrate. Lactose था, इसीलिए ही लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म के लिए जो एंजाइम्स चाहिए उनका सिंथेसिस हुआ. रिमेंबर, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज कैन नॉट एक्ट एज द इंड्यूसर्स फॉर द लैकोपेरोन. लैक्टोज है तो ही वो तीन एंजाइम सिक्रेट होगी. अगर लैक्टोज की जगह पे ग्लूकोज या गैलेक्टोज होता, यानी उसके जो प्रोडक्ट्स है लैक्टोज मेटाबॉलिज्म के या लैक्टोज का ब्रेकडाउन प्रोडक्ट है जैसे ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, अगर वो मीडियम में होते तो लैकोपेरोन एक्टिवेट नहीं होता. कैन यू थिंक फॉर हाउ लॉन्ग द लैकोपेरोन वुड बी एक्सप्रेस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज? सो रेगुलेशन ऑफ द लैकोपेरोन बाय द रिप्रेसर इज रेफर्ड टू एज नेगेटिव रेगुलेशन. सी, लैकोपेरोन का रेगुलेशन बाय द रिप्रेसर इट इज कॉल्ड एज नेगेटिव रेगुलेशन. क्यों नेगेटिव रेगुलेशन बोला है? Why it is called as a negative regulation? क्यों? Because
अगर रिप्रेसर ने ओपेरॉन के ऑपरेटर रीजन पे बाइंड कर दिया तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है, एंड इसीलिए उसको क्या बोला है, नेगेटिव रेगुलेशन. सो रेगुलेशन ऑफ द लैकोपेरॉन बाय रिप्रेसर, से पूरे ओपेरॉन को रिप्रेसर ही कंट्रोल करता है, राइट. सो रिप्रेसर ने अगर ओपेरॉन की ऑपरेटर साइट पे बाइंड कर दिया तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है. So that is why it is called as the negative regulation. It is a negative control system because expression is typically blocked by an active repressor, that is a lac repressor, that turns off the transcription. The lac repressor binds to the operator region and negatively controls or prevents the transcription, and therefore it is called as the negative regulation. LACOPERON is also under the control of the positive regulation as well, but it is beyond the scope of discussion at this level. See, repressor के presence में वो कैसा regulation है, negative regulation, but LACOPERON is also a positive regulation. but कैसे ये positive regulation है, ये point पे it is above our level. The discussion is not, or you can say it is beyond our level. So that was regarding the LACOPERON. See students, what happens in the absence of inducer, that is in the absence of lactose, and what happens in the presence of the inducer or in the presence of lactose. LAC-I जीन का बाइंडिंग होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, mRNA बनेगा, रिप्रेसर होगा, रिप्रेसर ऑपरेटर के साथ बाइंड हो जाएगा एंड RNA पॉलीमरेज को ब्लॉक कर देगा. So repressor, it binds to the promoter, prevents the RNA polymerase from transcribing the operon. लेकिन लैक्टोज है, फिर भी I जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा, रिप्रेसर बनेगा. ये रिप्रेसर किसके साथ बाइंड करेगा, इंड्यूसर. अपने केस में इंड्यूसर कौन है, लैक्टोज, जिसकी वजह से ये रिप्रेसर कैसा हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा. Inactive repressor cannot bind to the operator. Now what will happen, the RNA polymerase, it will bind to the promoter. This is the RNA polymerase and ये तीन जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन होगा. Z जीन बनाएगी beta-galactosidase, Y permease and A transacetylase, and all these three genes are required for the process of the metabolism of lactose. So students, this is regarding the LACOPERON. I end my lecture here. In the next lecture, we will be studying the final topics of this chapter, that is the Human Genome Project and DNA fingerprinting. Thank you students.